Hello, my friend. Welcome. So, in this class, we are going to see the AI and ML division, we can say. Um, so, here are the things that we are going to study. So, we are going to study about the introduction, then little bit advanced. Then we will study about the machine learning. Then we will study about the supervised learning, and then we will study about the unsupervised learning. So, these are the textbooks also that you can refer, and these are the articles. Okay. So let's start. So this is the unit one. So before going ahead, there is one thing that I want to share. This AIML, we can say it is completely theoretical. So here we are not going to see anything practical. So it will be little bit boring for you. So you will say, what is this? But say it is important from exam also. So in the end, we are going to see the MCQ questions also, which were asked in the examinations. So that we will see in a separate session. So here we are going to cover only and only theory part, and again it is boring session. So starting with it will be boring section. But see, in examination, examiner is going to ask the question, so that's why we have to cover. So if you want to clear the exam, अगर आपके है कि sir I want to clear the exam, then you have to study. So without this, you are not able to study. Okay. So AI intelligence, we can say artificial device. So maybe it's a software, or we can say software plus hardware. So both it is there. So it is given by John MC Katie in 1956. So if you are going to give the examination of bank PO or anything, so in that we are having basic computer awareness. So in that they can maybe ask who is the founder. So here you can see who is the founder over here. So in this AI, we are going to study about the various models, various uh, process that we are going to see. So maybe you know about chat or Copilot, or we can say Google, Gemini. So these are AI, and these all are GPT. These all are GPT. So if you want to write an algorithm, so your mathematics should be very strong. So if it is strong, then only you are able to write some algorithm. So we are just going to study only and only things which are important from exam. जो exam oriented चीजें हैं, we are going to study only those. So where you have seen the use of AI in the gameplay, you have seen the AI in the speech recognition. Also, you have seen the AI in our computer. Also, you have seen the face recognition. In that also, we have seen the use of AI. Also. And in expert system also. So nowadays in medical science also, it is been AI being used. And here we can see it is diagnosing the bacterial infection also. And in credit card companies also, so they can easily identify. So what is your behavior, how you are going to spend the money. So everything we can use by AI. So it can also help in detections of the fraud also. Yes. And then also we have seen in the NASA also. So if you want to go, you can say if you know about ISRO, if you know about NASA. So in the space also we have seen the use of AI. Okay. And then we will study about the in the last we will study about the basics of machine learning. So if they ask you where you have seen the use of AI, so here you can speak, sir, in this we have seen the use of AI. So the MISC you have used in the online game also, when we play with the game of boat. So in that also we have seen the use of AI.
Now there are so many definitions of AI and everything is right. So like this, the existing new offers to make a computer thinks. So a computer is going to think. Machines with minds. Machine with minds in full and little sets. This is AI. So maybe you have seen some movie also in that we are having the robot. So robot is ruling the earth also. So some movie you have seen that in that robots are ruling the earth. So like this also we can say uh, it is like basically a computer can think. So it can say which is right thing and which is wrong. Or maybe something the art of creating machines that perform functions that require intelligence. So we can say a machine plus intelligence, it is also an AI. So there are so many definitions of like the automation of intelligence behavior. This is also known as AI. Okay. Now, what is intelligence system? What is intelligence system? Intelligence system क्या है? System that think like human, like you can think. System that think rationally. System that behave like humans. So in China, we are having some robots. So that robot will, it is like made. So whatever thing you will ask, he will do. So that system is also going to behave like humans. So we can say think plus art. So this is not so important. The art of creating machines that perform functions require intelligence. So how to make a computer to do things which the movement and people do better. So in this AI, so we are having an agent. So in that agent, we are going to give some prompt or we can say some input we can give, and according to that, he will think and he will do the action. He will do the action. So an agent is anything that can be viewed, perceiving its environment through sensors, ending upon environment through actuators. Human agents can all have eye, ear, and other organs, sensor, mouth, other parts as the actuators. So we can see the use of AI in software in terms of networking also. In the network also, we have seen the AI. So let's suppose you are having a website and you have applied the AI as a firewall. So whatever the packet is going to a web going out, so it's going to apply the LSS. And it can easily identify which packet is having some virus or some uh, malicious intent, so it can block that packet also. Can block that packet also. Okay. ठीक है पे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है ये so you have seen the vacuum cleaner also. You have seen the vacuum cleaner also. So which can also use the AI. उसमें भी आपका क्या होता है एक AI हो सकता है वैक्यूम क्लीनर के अंदर. So maybe you have seen some AI, you can say Flipkart or Amazon. तो वहाँ पे भी आपका वैक्यूम क्लीनर आता है. Let's suppose if I show you. So like this we are having some vacuum cleaner we can say, and these all can detect, we can say where is the path, what is the path you need to follow, and if there is some object in the path also, so they can do the action on the basis of the object also. So here we can also see the use of AI. यहाँ पे भी आपका AI आ गया है. So the vacuum cleaner will see there is a
test. So according to that, he will act. So in that we can give some sequence also of the. So in that we can have clean like this stuff. So it can move left, right like this. Okay. On the basis of the sensor input. So you can write the code also for that also. So basically you need a sensor. Basically you need a sensor which is going to give the input, and we have the locations. The location we have the XYZ coordinate. Then we can say. So if we can say status is equal to dirty. So if it is dirt, then it is going to suck the dirt inside the vacuum cleaner. If it is not, then it can move the right or left. Okay. Omniscience. We need to distinguish between rationality and omniscience. And omniscient agents know the actual outcome of its action, can act according, but omniscience is impossible in the reality. तो ये आपका रियलिटी में पॉसिबल है. सो वी आर सेइंग दैट omniscience क्या है? It is like he know what is the actual outcome. He know what will be the actual outcome of this. Okay. So in 1 mark MCQ question, MCQ examiner can also ask what the omniscience agent. So in that also examiner can also ask what is omniscience agent. Now the rational agent. The rational agent not only gather information but also learns as much as is possible from what is perceived. So there is a learning in rational agent. If the agent relies on the prior knowledge, if the agent relies on the prior knowledge of its designer rather than its own concept, the agent is known as autonomy or autonomy we can say. तो ये तीन आपके एजेंट है. इस पे एग्जामिनर में एमसीक्यू क्वेश्चंस आ सकते हैं. तो मैं नाउ आई विल एक्सप्लेन हिंदी. हिंदी में देख लो आप. ओमनी साइंस में क्या होता है? यू नो द फ्यूचर आउटकम. तो जो भी आपका आउटकम आपको पता है, बट इन रियलिटी ऐसा यूजुअली नहीं होता है. नाउ वी आर हैविंग द रेशनल एजेंट. सो रेशनल एजेंट में क्या होगा कि इंफॉर्मेशन भी लेता रहेगा और लर्निंग भी होती रहेगी. इंफॉर्मेशन भी लेगा प्लस लर्निंग भी होगी. तो दोनों चीज होगी. अब जो ऑटोनॉमी एजेंट है उसमें होगा क्या? ऑटोनॉमी एजेंट में क्या होगा? सिर्फ उसका जो नॉलेज है, जो उसका डिजाइनर उसने जो नॉलेज दी है, उसके अकॉर्डिंग इट इज गोइंग टू एक्ट. लाइक क्लॉक. लाइक क्लॉक. उसमें जब आपने लिखा क्लॉक का, आपने बता दिया योर वर्क इज टू रोटेट, योर वर्क इज टू रोटेट, दैट्स इट. तो इट विल ओनली डू द रोटेशन लाइक दिस. So there is no learning and there is no experience. There is no learning and there is no experience. ठीक है. एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है. okay? अब क्या होता है? इन सब एग्जामिनर दे आल्सो आस्क द एमसीक्यू. इसमें एमसीक्यू पूछ लेते हैं इसका भैया फुल फॉर्म बताओ. वो क्या पूछते हैं? इसका फुल फॉर्म बता दो. क्या फुल फॉर्म है प्लीज? पीईएएस का क्या फुल फॉर्म है? इट इज परफॉर्मेंस इन्वायरमेंट एक्चुएटर्स एंड सेंसर. तो जैसे आपका एजेंट हो गया टैक्सी ड्राइवर, तो उसमें हमने आप क्या लगा दिया? ऑटोमेटेड टैक्सी. इसका बेस्ट एग्जांपल आप कह सकते हो टेस्ला. ठीक है. तो यू नो अबाउट व्हाट इज गोइंग टू टेक द. तो actuators, what he is going to do? So it's going to apply the brake or accelerator or steering, and these are the sensor which will going to guide. And these are the environment like road कैसा है, traffic कैसा है, रास्ते में लोग आ रहे नहीं आ रहे, pedestrian, and how is going to measure its performance by overall experience of the customer. इसके आप और भी एग्जांपल ले सकते हो पीस के. तो ये अलग अलग एग्जांपल है.
इन्वायरमेंट है, इसमें आपका सेंसर है और एक्चुएटर है. So what he will do, and then we are going to apply the performance measure on that. Then we will apply the performance measure on it. अब आपके इन्वायरमेंट टाइप्स कौन कौन से हो सकते हैं? इन्वायरमेंट टाइप एक्सेसिबल, इनएक्सेसिबल और फुली ऑब्जर्वेबल एंड पार्शली ऑब्जर्वेबल. डिटरमिनिस्टिक एंड सबोस्टिक. So, if the next stage of the environment is completely determined by the current state and the action selected by the agency, it is determining. You can find, you able to find. This is deterministic. If you are not, then you can see. So, like this, we have the episodic and non-episodic, then static and dynamic. Strict and continuous. So, these are the type we can. So, like this, we are having some examples also. You can see the examples also here. तो अब आपके जो अलग हैं, जैसे आपने कभी कोई ऑनलाइन गेम हुआ, आपने समवेयर यू हैव प्लेड और समवेयर यू हैव सीन द इमेज एनालिसिस आल्सो. ठीक है. तो अब जैसे गूगल है, गूगल का ऐसे एक आ रखा टूल आ रखा है, गूगल जेमिनी एआई. ठीक है. उसमें व्हाट यू विल डू, यू विल जस्ट अपलोड द फोटो. व्हाट यू विल डू, यू जस्ट अपलोड द फोटो. आपने फिर क्या किया वहां पे, पिक अपलोड. तो ये क्या है, एक इमेज एनालिसिस टूल है. इट इज इमेज एनालिसिस टूल. तो इसमें आपके एजेंट्स है, ऑब्जर्वेबल है, एब्सोल्यूट है, स्टैटिक है, डिस्ट्रिक्ट एजेंट. तो वो बता रहा है कि कौन कौन चीजें इसमें हो सकती है. नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस एजेंट. जो आपका इंटेलिजेंट है उसका क्या स्ट्रक्चर होगा, व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर. तो द जॉब ऑफ एआई इज टू डिजाइन एन एजेंट प्रोग्राम फंक्शन दैट इम्प्लीमेंट्स द एजेंट मैपिंग फ्रॉम concepts to the actions. Actions लेके आएगा from the person. We assume the program will run on some architecture computer device we known as the architecture. We can say which we can call the architecture. So agent is what? It is architecture plus program. This is called agent. What is the meaning of agent? It is architecture plus program. That is an agent. Now we are having some agents also. So we can have the four type of agents: simple, model based, and goal based, and utility based. Now, what is the simple reflex agent? What is the simple reflex agent? The simple reflex agents ignore the rest of the percept history, act only basis of the current percept. तो इसमें क्या होगा, हिस्ट्री यूज नहीं होता, करंट परसेप्ट यूज. तो एमसीक्यू क्वेश्चन में एग्जामिनर पूछ सकता है, व्हाट इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ simple reflex agent. So examiner can also form an MCQ question. So it is like rule on the basis of some condition it is going to act. अगर वो ट्रू है तो नहीं है, अगर वो नहीं है तो वहां पे ऐसे. इसमें आप कुछ भी कह सकते हैं. तो मान लो कि रेन हो रही है, इट इज रेनिंग. अगर रेन हो रही है सो आई विल डू दिस, अगर रेन नहीं हो रही सो आई विल डू दिस. तो ऑन द बेसिस ऑफ द सेंसर it will check if it is rain then I will do this, and if it's not rain then I will do this, like this. So it is not going to check the history. यहाँ पे हिस्ट्री नहीं देखेगा, ये बस देखेगा अभी क्या हो रहा है, करंट में क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग इन द करंट. बस वही चीज ये देखेगा. Now we are having the model based reflexes. We have the model based reflexes. Now the model based agent reflex can work in a practically observable environment that track the situation. The model based agent has two important factors. इसके दो important factor होते हैं. First, and model. It is knowledge about how things happen in a world. How things happen in a world. So we can call it a model based. तो उसमें आपका होगा क्या? Representation of the state on the basis of the history also. ठीक है. So it is like partially observable environment. So we have seen
observable. So in that it will take also history also we can see. ठीक है? तो आपका क्या history है? So what he will do on the basis of the environment also, and we can also use some observable environment, and we can also have the percept history also. Now they are having a goal based agent. So it is operate based on a goal in front of it, making a decision based on how to best to reach the goal based agent operates a search and planning function, means it target the goal ahead and find the right action in order to reach it. तो मान लो कि अह, आपको जैसे देखना है कि you have some goal. So example you can say there is a car. Now you have to reach to the home. This is your goal. ये क्या सर आपका goal है. Now in that path maybe there is a traffic, और हो सकता है कि there is a path hole, और यहाँ पे कुछ obstructions भी होते हैं. So like this it will take the curve, but eventually it is need to reach to the goal. It has some goal. So it will do the action. It will do the action on that his analysis and what is the main objective to reach the goal. So it can take the action according to it. So it can take the action. So in that what he will do. So जो ऐसे जैसे आपकी conditions आती रहेंगी, so according to the condition it will take some decision. According to the condition it will take the decision, but eventually what is the main objective, that to reach to the home, like this. So it will make decision in order to reach the goal. बस आपको ये याद करना और इसमें कुछ नहीं. Now we are having the utility based agent. Utility based agents based not on what is the goal, but the best way to reach that goal also. Utility is useful when there is a multi possible alternative agents has to choose the in order to perform the best action. ठीक है. अब मान लो कि आपके पास में होम है, एंड एक रास्ता ये जा रहा है, एक रास्ता आपका ऐसे जा रहा है, एक रास्ता आपका ऐसे ऐसे जा रहा है. इट विल टेक द बेस्ट एक्शन. इट विल टेक द बेस्ट एक्शन. सो इसका एडवांस वर्जन कैसे. तो जो आपका गोल बेस्ड एजेंट है, इसका एडवांस जो वर्जन वी कैन से इट इज द यूटिलिटी बेस्ड. Like it will take some inputs from our senses. So we can say percept. तो state रहेगी what in the world is like now, what will be like if I do the action. अगर A मैंने action किया है, so अभी क्या action होगा. अगर मैंने B action लिया, उससे क्या होगा. If I do the action C, what will happen. Then I am happy within state, so it will check it is the best or not. It will check this action is the best or not, like this. So अगर नहीं है best, so if I take B then it is best. If I C it is best. So in the last it will do the actuation and it will do the action which is having the best. Now we are having some problem solving. So you will give some problem and it will give you some out. So here we are having some action to reach to the specific state, and in that we will follow a specific path. So here you can see there is a path and there is a cost associated with that path. ये क्या है? This is a cost. If you want to reach from A to B, what is the cost and how you can find the best state? So you need to find the best state over. So here we need to find the cost function. It will give you the cost. So these are the available path and this will be the cost to it. So according to that, it will give you the best path. So here we are having some algorithm also, like a function which will take input and it will do some analysis and it will give the action like this.
तो मान लो कि जैसे आपका एक मैंने इनपुट दे दिया, देयर इज 8 puzzle problem. So you need to solve this. This is your initial set, and this is what you want. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So like this, you want to solve a puzzle. So what will happen? So you can move this device to this. तो यहाँ पे आ जाएगा फाइल, यहाँ क्या हो जाएगा? There will be blank. So like this, you are going to map the state, but eventually you want this goal state. Okay. So in that we are having some state and action like left move, right move, up move, or down move, and we are having the transition model. So given a state and action, they return the resulting action. For example, happily left to the right result and left to the move. So in the eventually, this is the goal that I want to have. Now it will check the cost. Will check the cost. कि भैया कितना cost आ रहा है. Now we are having the state space and problem space issues. So in that also, it is a basic AI model. In that we will do some, we can say, state space search by showing the uh, I can say problem state and legal operator and the initial goal and state. तो मेरा ये state है, ये मेरा goal है, and this is what I want to do. So according to that, he will do the analysis and he will do the operations like this. So you need to give the initial state also, and you need to do the goal state. So we don't need to read this. So ये अपने read के लिए important नहीं है. You can skip it. Now maybe you have heard of DSL. आपने you have in your BTech or BCA or MTech, MCA, you have studied about the DS. In that DSA, we are having algorithms. So in algorithm, what is the things that we are going to check? First, we will check the completeness कि भैया आपको ये solution देगा या नहीं देगा. Then optimal है या नहीं है. What is the time complexity? What is the space complexity? So for every algorithm which we are going to write, we are going to check the four important factors. अब एग्जाम में कौन सा एमसी क्वेश्चन आ सकता है? You can say which of the following is not an important factor while writing an algorithm. When you are going to write an algorithm, so which of the following is not, which of the following is not one of the four important factor over here. So like this, examiner can also frame the question. Now, this is completely DSA, so this you can skip if you want. This is not so important. So searching many traditional search algorithm use an AI for the complex program. ठीक है इसको हटा, इसको कोई मतलब नहीं है. यूनिफॉर्म सर्च एंड इनफॉर्म सर्च, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको अपन देख लेते हैं. यूनिफॉर्म सर्च और जो इनफॉर्म सर्च है वो दोनों क्या चीज है? तो यूनिफॉर्म सर्च इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लाइंड, एग्जिस्टिव एंड ब्रूट फोर्स सर्च. To use no information about the problem to guide the search, therefore may not be the effect. It is uniform. Now we are informed search. It is called heuristic or intelligent search. Use information about the problem to guide the search. Usually guess the distance to a goal, therefore efficient. But the search may not be always possible. So what are the things which can have?
So here, what are the things that we can have over here? So in ununiform search, अब इसमें कौन कौन सी चीजें आ सकती है? So examiner can also ask question like this. ठीक है, तो एग्जामिनर यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि यार इसमें कौन कौन सी चीजें आती है ब्लाइंड सर्च. तो दिस इज माय अनयूनिफॉर्म, दिस is अनयूनिफॉर्म. यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ, विच आर द थिंग्स कैन बी कवर्ड इनटू द यूनिफॉर्म सर्च, कौन कौन सी चीजें आ सकती है? बस आपको नाम याद रखना है. ब्रेथ फर्स्ट सर्च आ सकता है इसमें. ये फर्स्ट लिस्टेड यहाँ पे दिया हुआ है. तो इन द डीएसए यू स्टडी अबाउट, जो आपका डीएसए था उसमें आपने यू स्टडी हाउ द बीएफएस बीएसएफ आपका वर्क कैसे करता है, यू स्टडीड. इफ यू डोंट नो, तो व्हाट विल हैपन इन द बीएफएस? बीएफएस सबसे पहले ये रोटी होगा, फिर ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा. तो लाइक दिस लेवल बाय लेवल वी विल गो. डी एफ डी बी एफ लाइक दिस विजिट. Okay, so like this we are going to visit in the BFS. Now the application of the BFS. अब एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कहाँ पे इसका एप्लीकेशन आ सकता है, एमसीक्यू क्वेश्चन. यहाँ से भी आपका एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है, where we have seen the application. So in the GPS navigation system, one of the best algorithm used to find the navigation in the GPS. So ये important क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. तो इसको लिख लेना, दिस इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. Now we are having the DFS. Again, it is depth of first search. So what is happening over here is we are going the depth, and here we should go a order of rigidity. So here we are having the time and space complexity. So where you can use. So when you don't care about the closest of starting vertex, when the graph and tree is not big or connect, or when we are having the space issue or when we have the टाइम मशीन. तो है ऑल्सो यू कैन इन्फॉर्म दिस. ठीक है, तो इसमें बस ये दो चीजें आपको याद है करनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. ये आपके एग्जाम में आती है. ठीक है, और एक आपका ये टिपिंग डीएफएस. तो ये तीन आपके पास एग्जाम में, देखो आपको किस टाइप के क्वेश्चन आ सकता है. आपके एग्जाम में क्वेश्चन यही आ सकता है कि यार जो आपका अनयूनिफॉर्म है सर्च है, उसमें कौन कौन सी चीजें आती है. सो डीएफएस, बीएफएस और डेप्थ और डीएफएस, ये तीनों आपको चीजें याद कर. ठीक है, देन वी आर हैविंग द इन्फॉर्म सर्च और ह्यूरिस्टिक सर्च. ठीक है, भी अपन ने देखा था अनइन्फॉर्म सर्च, अब देखेंगे अपन इन्फॉर्म सर्च. ये तो इंपॉर्टेंट चीज है, बस वही मैं बता देता हूँ. ह्यूरिस्टिक इज अ मेथड दैट
might not always find the best solution, but it is guaranteed to find a solution. ये कह रहा है कि इसमें बेस्ट तो नहीं निकाल सकता, बट हाँ ये मैं कह सकता हूँ कि एक सॉल्यूशन दे दूंगा, वन सॉल्यूशन एटलीस्ट इन अ रीजनेबल टाइम. तो इसमें हम यूक्लिडियन डिस्टेंस एंड मैथन डिस्टेंस, दिस थिंग वी हैव नो इन अदर डीएसए, सो इसमें अपन ये दोनों चीजें कर चुके हैं, सो वी हैव कवर्ड दिस. तो हिल क्लाइंब एल्गोरिथम वी हैव आल्सो कवर्ड इन द डीएस. एक बार देखना है तो देख लो. A hill climb algorithm is a local search algorithm which continuously move in the direction of increasing elevation of the value to find the peak of the mountain or the best solution to the problem. It terminates when it's reach a peak value where is no neighbor has a higher peak. It is also called greedy local search, as looks only for a good immediate neighbor, नॉट बियॉन्ड तक. तो ये क्या करेगा, आप यहाँ हो आप यहाँ पे, तो जो हाई होगा, मान लो इसके दो वैल्यू, इसकी वैल्यू तीन, इसकी वैल्यू है चार, तो इट विल पिक द वैल्यू फोर. विच इज वेरी हायर, इट इज गोइंग टू पिक दैट वैल्यू ओनली. तो व्हाट ही विल डू, जस्ट पिक अ रैंडम पॉइंट. आपको कोई भी रैंडम पॉइंट है, उसके जो नेबर है आप उसमें देख लो, उसमें whoever is having the highest, just pick that, and again state two. So neighbors you are going to look at, only the neighbors you are going to look at. तो वी आर नॉट गोइंग टू गो इन द डेप्थ, हमको सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें देखनी. तो हिल क्लाइंब एल्गोरिथम है, सभी का लोकल मैक्सिमम अपना रहेगा, प्लेट्यू रहेगा. तो व्हाट इज प्लेट्यू, एन एरिया ऑफ द सर्च स्पेस वेयर द इवोल्यूशन फंक्शन इज फ्लैट दैट रिक्वायर्ड अ रैंडम वॉक. अब मान लो कि आप यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आपने देखा कि सर कोई अप ही नहीं है, सो यू विल डू अ वॉक इन अ रैंडम डायरेक्शन, एंड अगेन यू आर गोइंग टू फाइंड द पीक वैल्यू. पीएफएस यू नो, ओपन एल्गोरिथम. अब आता है एस्ट. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है एग्जाम में. इससे बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे आपके, जैसे आईबीपीएस का एग्जाम हो गया, यूजीसी नेट हो गया, तो उसमें क्या बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एएसटी को. यू मे बी हर्ड दिस इन योर डीएसए व्हाइल स्टडीइंग, यू हैव हर्ड दिस एल्गोरिथम. तो द एग्जामिनर आस्क, कैन से most of the questions from here. So the best fit algorithm is simplified in the form of a stick algorithm. A star we can say. A star algorithm. Pronounce A star. A tree search algorithms that that finds a path from a given initial node to the given goal node, and or one passing a given goal test. It employs a heuristic estimation which rank nodes by estimation of the best route that goes through that node. It widgets the node in order to the heuristic estimate. So it is very similar to the branch first search, but it is more accurate because a stick a star takes in the account that node have already been traveled. So जो node आपने already किया है travel, so it is like advanced version of the PFS, and also is going to take the advantage of the node is already been visited. ठीक है. तो अब एग्जाम में आपको एस्टिक एल्गोरिथम लिखने को नहीं आएगा, एग्जाम में नहीं आएगा. इसके एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे कहाँ पे इसको यूज कर सकते. तो जितने भी आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं सब यूज बेस्ड क्वेश्चंस. He will give you a problem statement and he will say which algorithm we can use over here like this. G plus H इसमें होगा. So G क्या है, डिस्टेंस है, और we can say cost, और H is the estimation of the distance to the solution from the current node. ये आपका है एल्गोरिथम है.
So we don't need to go for the algorithm because here in AML, in examination is not going to write you the algorithm. So वो नहीं पूछेगा कि algorithm लिख के बताओ. So we will skip this. And also we can apply the AST algorithm. ये स्टेज है उसके नियर बाय स्टेज जो नोड विजिट किया हुआ है उसका भी डिस्टेंस कैलकुलेट कर. Like this, we will have the distance from all the nodes or from A. तो A से आपको अगर कोई को नोड विजिट करना है तो what is the best path you can follow over. तो AST की क्या देगी ऑप्टिमल सॉल्यूशन देगी. एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन देगी. एंड ए स्टार AST क्या चीज है. इट इज एफिशिएंट है अनइन्फॉर्म्ड सर्च. इट इज एफिशिएंट देन अनइन्फॉर्म्ड. गेम प्लेइंग मीन नेक्स्ट में ये सब अपन को नहीं देखना. जो इंपॉर्टेंट चीजें सिर्फ वही देखें अपन एग्जाम ओरिएंटेड देखना है. अल्फा बीटा प्रूनिंग एल्गोरिथम. It eliminate a branch of a search tree from consideration without exhaustive examination of each. Pruning क्या है? The basic idea to the prune portion of a search tree that cannot improve the utility value of the min or max or min node just by considering the value of the nodes seen so far. Alpha beta pruning is used on the top of min max to search to detect the part that not need to be explored. What is alpha cutoff? Given a max node, the cutoff of search below that don't generate then or examine any mode of more of n's children. If alpha is greater than beta and alpha increase and pass beta from the given. बीटा में क्या है कि अगर बीटा आपका डिक्रीज और अल्फा ऑन द अबव सिचुएशन. ये तो ये भी एल्गोरिथम है तो इसको भी आपको नहीं देखना है. इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट. अभी अपन ने एएसटी का एल्गोरिथम देखी थी. तो वो क्या रहा था डी आपका बोल क्या था डीएफएस उसमें यूज हो रहा है. नाउ वी विल सी द एएसटी एल्गोरिथम. एओ स्टार अभी अपन ए स्टार देखा था एओ स्टार. So the depth first search and the breadth first search given earlier of or trees or graphs can easily adopt by and or graph. The main difference lies between the way uh, termination condition are determined. Even all goals are following and nodes must be realized when a single goal node or an or node will do. So for the purpose we use AO star algorithm. AO star. A star हमने देखा था स्टार algorithm. Here we will use two array and one heuristic function. So how it's going to follow. So ये चीजें अपन को नहीं देखनी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं. तो स्टेप देखने हैं तो आप स्टेप देख सकते हो कि भैया आप सबसे पहले ओपनिंग नोड लो. उसके बाद में एक सॉल्यूशन ट्री बनाओ. लेट्स सपोज दिस इज T0. फिर एक उसमें नोड उठा लो. एंड उसके बाद फिर वो नोड है उसका जो मेंबर ऑफ टीयर नोड उसको उठाओ. फिर एक ओपनिंग नोड लो. उसके बाद में एक टर्मिनल कोड नोड बनाओ सो विच इज एंडिंग. इज एंडिंग नोड. उसके बाद में उसके लेवल्स के जितने भी एंसेस्टर्स है उनको उठाओ. फिर उसको जो नोड है उसको आप मार्क कर दो सॉल्व. फिर यू कैन से इट इज सक्सेस और एग्जिट लाइक दिस यू कैन गो. ठीक है.
एल्गोरिथम नहीं पूछता एग्जाम में, तो वी कैन स्किप इट। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एओ स्टार एल्गोरिथम में पूछ सकता है कि एडवांटेज क्या डिसएडवांटेज क्या है, वो अपन को देखना है एग्जाम पॉइंट। इट इज एन ऑप्टिमल एल्गोरिथम। ये क्या है? ऑप्टिमल एल्गोरिथम है। इफ ट्रैवर्स अकॉर्डिंग टू द ऑर्डरिंग ऑफ द नोड्स, इट कैन बी यूज्ड फॉर और एंड ग्राफ। What is the disadvantage? Sometimes it is unresolvable nodes if it cannot find the optimal path. It is complexity is rather than, so its complexity will be the more. अदर जो है आपके हुए तो उसमें कहाँ पे यूज होगा? ऑर्डरिंग ऑफ द नोड्स में। ये याद कर लेंगे। ये एआई बता रहा है ये क्या चीज है, इसको नहीं देखा था आपको। एआई वी नो दैट एआई। तो अगेन इट इज एन एल्गोरिथम। तो हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड अ लॉजिक? तो आप जो लॉजिक है वो आप किस टाइप से लगा रहे हो? तो आपका जैसे रीजनिंग, आपने कभी भी एग्जाम दिया होगा, रीजनिंग में लिखा था ना कि ए इज नॉट अ डॉक्टर, लाइन लिखी होगी, एंड ए इज मैरिड टू बी, बी हु इज इंजीनियर, लाइक दिस, एंड ए एंड बी लाइक दिस कलर। सो एक रीजनिंग का स्टेटमेंट गिवन है, देयर इज अ रीजनिंग स्टेटमेंट। so we are a human, so we will apply some case and we will solve the question. now AI कैसे सॉल्व करेगा? तो AI will write this algorithm में and or statement and it will take some inputs. तो अगर आज मेरा संडे नहीं है, तो it is inverse of P. So like this it will apply the rules, जैसे रितिका है, रितिका is a doctor or engineer, तो दो स्टेटमेंट दे दिए, so it will make two case, case वन और case टू, case वन और case टू, और we can say left node एंड राइट नोड। अगर जो दीपिका है वो डॉक्टर है, तो वी कैन से अगर दीपिका डॉक्टर है तो जो मेरा लेफ्ट नोड है इट विल बी द राइट। अगर दीपिका मेरे इंजीनियर है तो राइट नोड नोड। नाउ आई विल सॉल्व द प्रॉब्लम इन बोथ लेफ्ट एंड राइट। तो जो लेफ्ट और राइट नोड है आई विल सॉल्व अ प्रॉब्लम इन बोथ। नाउ आई विल चेक कि जो मेरा गोल है वो उससे फाइंड हो रहा है नहीं हो रहा है। सो इफ आई एम गोल इज गोइंग टू मीट विद राइट साइड और लेफ्ट साइड, सो दैट सॉल्यूशन विल बी द complete solution for me. So the reasoning puzzles that we have seen with our naked eye. So as a human, we can apply our logic and we can solve the question. So in the similar way, the AI is also going to apply its logic and going to make some trees, or we can say find we can say specific path. So it will check eventually which path is going to match with that. So जो आपका path, it's going to check. Now, proportional logic. तो इन दैट वी विल रिप्रेजेंट द फैक्ट्स एट इधर ट्रू और फॉल्स। अगर आपने कह दिया कि आज रेन है, आर रेन मतलब आर मतलब रेन, तो अगर ये ट्रू होगा तो दिस विल बी द सॉल्यूशन। इफ इट इज फॉल्स देन दिस विल बी द सॉल्यूशन। So like this you will create multiple solution, and in the end you are going to check with the final stage. If final stage is going to matching, then whichever path is going to match, that will be the right answer. So the relation relates to the single object binary relation. Relation retrieves the multiple objects attain
kind of relations are the best considered function in the given object must relate to the exactly one object unary relation एक ही आपका relation बना दिया आपने unary relation example में Richard from the we can say Richard Lloyd Harter it is a king of England तो उसका जो ब्रदर है इविल किंग है उसने उसके बाद में जैसे रिचर्ड की हो गई मौत हो गई उसके बाद में उसने रूल किया यहाँ से लेके यहाँ तक इसने रूल किया अब मतलब ये रूलिंग हो रहा है सो इट इज यूनिटरी रिलेशन भाई ये आएगा इसके बाद ये आएगा इसके बाद ये आएगा इसके बाद ये आएगा सो इट इज ए रिलेशन नाउ क्वांटिफाई क्वांटिफाई express property either in entire collections of objects instance of enumerating by objects name so in that we are having the universal quantifier or existential quantifier universal quantifier depends on the following given a sentence px or all of x p where p is a logical expression that p is true for every object of x तो इसको हम क्या कहते हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर सो फॉर एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ एक्स दिस इज द सिंबल ठीक है दिस इज द सिंबल फॉर एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ एक्स p विल बी द ट्रू जितने भी आपके ऑब्जेक्ट्स हैं p विल बी द ट्रू दिस इज यूनिवर्सल क्वांटिफायर so p true given the model p is true for all possible extended interpretation constructed from the interpretation relation in the given the model which can extend interpretation specific domain element to the which x refer for example all kings are person जितने भी आपके king हैं which are person so we can say all x king is equal to person of x so it is a universal quantifier मतलब all तो मतलब आपने this symbol you have seen somewhere so what this symbol known as universal quantifier this symbol is known as a universal quantifier इसको हम क्या कहते हैं universal quantifier all kings are persons so which can say kings and person so p will be the true for every object of x जितने भी kings होंगे वो क्या हो जाएंगे will be the person now existential quantifier e ये अपन ने देखा था यूनिवर्सल क्वांटिफायर अब हम देखेंगे existential quantifier यूनिवर्सल क्वांटिफाई मेक स्टेटमेंट अबाउट एवरी ऑब्जेक्ट हर एक ऑब्जेक्ट के बारे में यूनिवर्सल बात करता है उससे कहना कह दिया कि ऑल मैन्स आर ह्यूमन तो जितने भी मैन है बट दे विल बिकम ह्यूमन तो इन द एग्जिस्टेंशियल quantifier we can make statement about some objects in the universe without naming it by using the existential quantifier the sentence exp it means p will be true for at least one object of x more precisely exp is true in the given model, P is true for at least one extended interpretation that assigned to X, not to the complete. एक बोल दिया तो ठीक है जैसे लिख दिया मैंने for some of X that King John has crowned his head to EX of crown one of the head अब कोई किसी एक को ये दे देगा तो anyone any but at least there will be one anyone तो ये सिंबल्स आपके आ जाते हैं एक तो और एक हो गया आपका दोनों सिंबल आ गए यहाँ पे यूनिवर्सल और एक्सटेंशन यूनिवर्सल में होगा क्या आपका और मैंने जैसे लिख दिया मैन तूने मैंने लिख दिया कि मतलब हियर आई हैव मेंशन ऑल किंग्स आर मैन ठीक है तो जितने भी किंग है वो होंगे क्या आपके ऑल विल मैन मैंने लिख दिया एक्सटेंशन क्वांटिफायर ऑफ लेट्स सपोज आप लिख दिया प्राइम मिनिस्टर तो हियर आई हैव मेंशन दैट फीमेल so it means some female can be the prime minister
सो एक तो हो गया ऑल के लिए हम क्या यूज करेंगे, वी विल यूज द यूनिवर्सल क्वांटिफायर फॉर द ऑल के लिए यूनिवर्सल, और एग्जिस्टिंग के लिए हम कहेंगे सम, एटलीस्ट सम। नाउ वी आर नेस्टेड, सो इसमें दो चीजों का तीन चीजों मिला दो, दैट विल बिकम नेस्टेड। जैसे एवरीवन डिसलाइक मेडिसिन, हर किसी को मतलब ये क्या लगता है, डिसलाइक मेडिसिन। इन सम सेशन देयर एग्जिस्ट डज नॉट एग्जिस्ट समवन हु लाइक मेडिसिन। मैंने ये लिख दिया कि यार एवरीवन लाइक डिसलाइक मेडिसिन, हर किसी को जो है मेडिसिन पसंद नहीं है, एवरीवन डिसलाइक मेडिसिन। तो दिस स्टेटमेंट कैन बी रिटन लाइक दिस, nobody in this world, nobody exists who like medicine. So invert of that. So invert. So everyone, it is universal quantifier. Likes X medicine. So invert. We have used the invert. Invert over here. So similarly, same things can be written over like this also. So when you are BTech, you have a study about the team organs. मैंने लिख दिया यार all of X is like P. So it is inverse. So it will be equivalent of invert of E XP. So this will be the true. अब क्या होता है इसमें, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाता है एमसीक्यू। ये एमसीक्यू क्वेश्चन आपके आईबीपीएस में बहुत बार आए हुए हैं, यूजीसी नेट में आपके बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, गेट के अंदर भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। वो क्या करता है, इट विल गिव सम एमसीक्यू क्वेश्चन, एमसीक्यू में वो दे देगा, ऑप्शन दे देगा विच इज ट्रू बाय यूजिंग द यूनिवर्सल और ई क्वांटिफायर। तो इट विल गिव ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन, मान लो इसने ऑप्शन ए दे दिया, ऑप्शन बी इसने ये दे दिया, ऑप्शन बी मान लो वो ये लगा दे, ये लगा के दे देगा। सो इट विल आस्क विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो ये जो प्रॉपर्टी है, दिस प्रॉपर्टीज, ऑल दिस प्रॉपर्टी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इसका, डायरेक्ट, बस आपको इसमें देखो अपना दिमाग नहीं लगाना। देयर इज टू थिंग यू कैन डू, आइदर यू अंडरस्टैंड, आइदर यू अंडरस्टैंड, कि आप देख लो कि इसका क्या मतलब निकलता है, आइदर अंडरस्टैंड, आप देख लो इसका मतलब क्या है, आइदर इसको याद कर लो, रिमेम्बर। टू ऑप्शन यू है, आइदर अंडरस्टैंड और आइदर रिमेम्बर। तो 1 marks क्वेश्चन कैन आस्क इन द एग्जामिनेशन, इट विल डायरेक्टली आस्क टू यू कि व्हाट इज हैपनिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इसमें जो गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, डायरेक्टली ही विल आस्क दिस थिंग। तो we can say everyone dislike medicine, everyone dislike medicine. So this is all of x, so it is written that all x, all, उसके बाद में वर्ड्स जैसे ये आपको लगा देना है, लगा दिए इनवर्ट, मीन्स have all like inverse, like of opposite, everyone dislike, this complete we can say dislike, complete will become inverse, everyone dislike medicine. So we can say some, मतलब not some, मान लीजिए some like medicine. So there are two statements. See, please try to understand. Some like medicine, but this will be wrong. So we have to include not. So we will include not. So there is no sum. There is no sum. So we can say that no
Some like medicine. So there is no some. There is nobody who like medicine. So both statement are true. Try to understand. इसी से आपके क्वेश्चन बनेंगे. हम यहाँ पे लिख दिया not all. So all like medicine. So we will say not all. Not all like medicine. This statement which is written over here. Not all like medicine. So this we can written here like medicine by no medicine. So all like medicine, no medicine. So we like which medicine, no medicine like this. So if you understand this thing, then you can easily formulate this thing also. So this is very, very important from exam point of view. So wherever you are making the notes, please like this. Please write this. So wherever you are making the notes, do write it. This is important from exam point of view. ठीक है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है So some, not some, we are having this quantifier, constant, variable way of saying this thing. Now we have forward chaining and backward chaining ही ठीक है So inference engine and inference engine is the computer of the intelligence system in the inference intelligence which apply logical rules to the knowledge base to infer new information from the known facts. The two inference was expert system inference commonly proceed with two modes. इसमें दो है forward chaining है और backward chaining. So here what we are going to do, we are going to infer the new information. We are going to infer the new information from where? From the known facts. So whichever facts you are going to know, so you are going to infer the new information from that. So what happened in a forward chain? So what happened in forward chain? तो बस आपको इसमें दो मोड आपको याद करना है कि फॉरवर्ड चेनिंग है और आपको बैकवर्ड चेनिंग The Horn clause and the definite clause of the formal sentence, which enable knowledge base use most restricted and efficient inference algorithm, logical inference algorithm, use forward and backward chaining approach, which require KB in the form of the first order definite clause. ठीक है definite clause क्या होता है a clause which has a disjunctions of literals which exactly one possible literal. It is defined clause in strict Horn clause. So Horn clause क्या होता है और clause in which a disjunctions of literal at most one value इसमें देखो इसमें क्या था exactly one था इसमें क्या है at most आपका one रहेगा horn clause hence all defined clause are the horn clause so here we are having the inverse of p match with inverse of q or with match with k so exactly one was so where what is the value of k k is a literal so it is equivalent that p conjunction with a q can determine the at least one forward chaining. So forward chaining is also known as forward deductions or forward reasoning method. Forward reasoning method. Which method? Forward reasoning method. When using an inference engine, forward chaining is form of reasoning which start with atomic sentence of the knowledge base applies infer rules the forward direction to extract more data until the goal is reached. जब तक goal reach नहीं हुआ, so you are going to find forward chaining एकदम start from the known fact. तो जो आपको चीज पता है, whatever thing you know, known fact, trigger all the rules whose premises are satisfied. Add conclusion to the known fact. तो जो आपका known fact है उसमें देखो कि what are the things we get. The process repeat until the problem is resolved. तो उस process को आप repeat करते जाओ. So until when? Until your the solution is achieved.
द फॉरवर्ड चेनिंग प्रॉपर्टी क्या होता है? इट इज डाउन अप रोड, इट्स मूव बॉटम टू टॉप। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, एमसीक्यू क्वेश्चन। तो इन फॉरवर्ड चेनिंग वेयर वी मूव, सो फ्रॉम फॉरवर्ड चेनिंग वी मूव बॉटम टू टॉप। It is a process of making a conclusion, known fact or data by starting from initial state reached to the goal state. Forward chaining approach is known as data driven. We reach the goal using available data. तो जो आपको known fact है उसी में रहेगा. Forward chaining is commonly in expert system like clips, business, production, rule system. Step से step को कोई मतलब नहीं देखना अपन को. Backward chaining. Backward chaining is known as backward deduction or backward reasoning method. In inference engine, a backward chaining algorithm form of reasoning. We start with the goal. Goal से आप start करो. You are starting with the goal. Works backward chaining to the find known to known fact. तो इसमें आप क्या करो? Fact निकाल दो. So what is happening in the forward? Known fact से आप goal में जा रहे थे. इसमें आप क्या कर रहे हो? Goal से आप known fact में आप जा रहे हो. So it is what approach? Top down approach. It is top down approach. ये वो approach आपकी what is that? It is bottom up approach. So दोनों approach में confusion नहीं हो. So backward reasoning, the goal is broken into sub goals. Sub goals are proven to the fact. तो अपन देख रहे हैं कि फैक्ट जो था वो ट्रू है या नहीं. Backward chaining algorithm used in a game theory, automated theory, proving force inference engine, proof assistant, various AI application. तो backward chaining use the DFS. ये क्या यूज करता है? DFS यूज. Now this is the difference between forward chaining, backward chaining. थोड़ा सा important है, एग्जाम में आ जाता है. So what question the examiner can ask? He can ask which of the following is not true about forward or backward chaining. So like this, he will give you some statement, and according to the statement, he will ask which of the following is not true. इनमें से कौन सा true नहीं? Like this, he will ask the question to you. तो बैकवर्ड क्या यूज करता है? डीएफएस यूज करता है. ये क्या करता है? बीएफएस आपका यूज करता है. तो इसमें वी आर हैविंग द फैक्ट, फैक्ट से गोल आएगा, और इसमें वी आर हैविंग द गोल, गोल टू फैक्ट. In forward chaining, we aim for the any conclusion, and in backward, we aim for the required data. This is the difference. Okay. So next thing we will see in the next class.